Good evening, viewers, and welcome to Hornbilltv's Prime Time. This is your anchor, Kekrizanyo Solo. First, the headlines. Uttar Pradesh Anti-Terrorism Squad on Friday arrested a man employed at the Ordnance factory in Firozabad for allegedly spying for Pakistan's intelligence agency, ISI, after being ensnared in a honey trap. Indian origin astronaut Sunita Williams and Butch Wilmore are scheduled to leave the International Space Station by March 19th at the earliest, said NASA. Rescue operations are underway in Nagarkurnool on Friday for 7 workers still trapped inside the SLBC tunnel of the Sri Sailam Left Bank Canal since February 22. Various political leaders across party lines celebrated Holi on Friday and extended wishes of unity and happiness to people across the country. Those were the top headlines, and now for the news in details. First off, the Uttar Pradesh Anti-Terrorism Squad on Friday arrested a man employed at the Ordnance factory in Firozabad for allegedly spying for Pakistan's intelligence agency, ISI, after being ensnared in a honey trap. The accused, identified as Ravinder Kumar, was detained along with his associate from Agra. ADG UP ATS Nilabja Chaudhary said that ATS UP and their associate agencies got info that there is a person named Ravinder Kumar who was sharing different confidential and sensitive information with his Pakistan IAS handler. Agra unit did a preliminary interrogation of Ravinder Kumar and he was called for ATS headquarters for detailed interrogation, where it was proved that he shared every sensitive information through a handler named Neha. This ISI module reportedly had been around for a long time and they allegedly trapped people and extracted information from them, which poses as a huge threat to national security. It was allegedly found that he shared information with the handler from time to time, which included the daily production report of the said Ordnance factory in which he was working, and the receipt of stores, other documents of criminal circulation, stock arrivals and requisition. और उनके सहयोगी कई एजेंसीज जिनके साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं, उनके आसूचना उनको प्राप्त हुई थी कि जो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जिसमें हजरतपुर एग्जैक्टली जगह पर नाम हजरतपुर है, जिला फिरोजाबाद। तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक ISI हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं और काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं हैं। तो इसी बात पे काम करते हुए हमारे आगरा यूनिट द्वारा उक्त रविंद्र कुमार से प्रारंभिक पूछताछ कल की गई एवं विस्तृत पूछताछ हेतु उसको फिर ATS मुख्यालय बुलाया गया, जहां पे ये प्रमाणित हुआ कि उसके द्वारा नेहा नाम के एक हैंडलर के माध्यम से काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं जो है उन साझा किया गया, जो कि करने के वो हकदार नहीं था, उसके पास में आना भी नहीं चाहिए था। ये एक मोडस ऑपरेंडी ISI की काफ़ी दिन से है कि अलग अलग हैंडलर्स के माध्यम से, विशेषतः महिलाओं के नाम लेकर हैंडलर बनाए जाते हैं और उसमें हनी ट्रैपिंग के माध्यम से, अन्य चैटिंग वगैरह के माध्यम से संवेदनशील जो संस्थाएं हैं, जैसे वाइटल इंस्टॉलेशंस हम लोग के, उसके लोगों को ट्रैप करते हुए उनसे सूचना निकाल लेते हैं, और जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारी खतरा बना रहता है। तो तदनुसार हम लोगों ने इससे पूछताछ करते हुए ये ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा कई सूचनाएं समय समय पर उक्त हैंडलर को शेयर किया गया, जिसमें कि उक्त ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट और रिसिप्ट ऑफ स्टोर की जो रिसिप्ट होती है, मतलब स्टोर में कितने सामान शेष है, MSCP प्रमोशन, अन्य जो है रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलेशन के जो कागज होते हैं,
और जो स्टॉक आने वाला होता है, जो रिक्विजिशन होती है, उसके संबंध में भी सूचनाएं दी गई। ये सारे अनअप्रूव्ड मतलब अप्रूवल के बिना ये सूचनाएं किसी के साथ साझा नहीं की जा सकती। तो ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित भी हुआ कि इसके द्वारा लगातार सूचनाएं साझा की गई। विशेषतः ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो हमारे देश के गगनयान परियोजना से भी जुड़ा हुआ है, जिसके तहत भारत द्वारा मतलब चौथे राष्ट्र के रूप में एक कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन करने के तरफ हम लोग अग्रसर हैं। तो उस टाइप के सूचनाओं के कारण भी साझा किया जाने की संभावना बनी हुई है। तो इसके संबंध में हम लोग आगे और छानबीन कर रहे हैं। इस समय हम लोग इतना ही बताने की आप लोग को इतना ही बताने की स्थिति में, शेष इसके सारे अन्य कॉन्टैक्ट्स और ऐसे अन्य हैंडलर्स, जो अन्य एजेंट्स जिन हैंडलर्स के द्वारा मतलब चलाए जा रहे हैं, उसके संबंध में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं यही अनुरोध करूंगा सभी संवेदनशील संस्थान, हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस के सभी अधिकारियों से कि अपना सिक्योरिटी ड्रिल, SOP वगैरह अपडेट करें और अपने कर्मचारियों के ऊपर एक मिनिमम लेवल ऑफ सिक्योरिटी चेक बनाए रखें, ताकि आगे इस तरीके के सिचुएशन से बचा जा सके। Moving on to the next news. Holi festival celebration began on Friday in Manipur with great pomp and gaiety, first time since ethnic violence erupted in 2023. The 5-day celebration began with traditional fervor, and Holi festival is called Yaoshang in Manipur. Due to ethnic tensions in the last 2 years, the festival was toned down. However, renewed zeal is seen this year. हरि बोला हरि बोला हरि बोलो। पहले तो अपना नाम बताइए था। मैं एस प्रेमानंद सबनालपम प्रेमानंद सर। और होली जो है किस तरह से मणिपुर में मनाया जाता है, ये बताइए। मणिपुर में होली जो है वो विशेष करके 5 दिन का होली होते हैं। सबसे पहला दिन जो है, जैसे आप देख रहे हैं पीछे, इसको याओशंग बोलते हैं। ये नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में इसको होलिका दहन बोलते हैं। उसमें कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके जलाते हैं, वैसा नहीं है। हमारे यहाँ सिस्टमेटिक रूप में एक घर बनता है। याओशंग मतलब याओ माने जो गाय है, बछड़े हैं, उसका रहने का घर होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उसमें प्रवेश करेंगे, फिर पूजा पाठ होगा, उसके बाद जलाया जाएगा। जलाने के बाद जो छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, हर घर में जाते हैं, उसको नाकथेंग बोलते हैं, कुछ पैसे देते हैं, तो फिर बच्चे आशीर्वाद देते हैं। जो बच्चे का जो आशीर्वाद है सबसे बड़ा माना जाता है। ये अगले दिन सुबह, दूसरे दिन सुबह तो होता है। उसके बाद जो खेल कूद है, जैसे यहाँ से कुछ लोग मसाल लेके गए, वैसे कांगला है, वहाँ से कुछ लोग मसाल लेके जाते हैं। वो जब तक खेल होती है तब तक जलाए रखते हैं। तो उस प्रकार 5 दिन का है। और इस बीच जो अपना सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो उनका एक दल होता है, होली दल। वो जगह जगह घरों में जाते हैं, फिर भगवान का नाम लेते हैं, संकीर्तन होता है, ये एक होते हैं। दूसरा, रात को जो है फिर युवाओं का एक कार्यक्रम है, उसको थाबल चौंगा बोलते हैं। थाबल मतलब जो पूर्णिमा के दिन जो वो रहते हैं, उसमें जो नृत्य करते हैं उसको थाबल चौंगा बोलते हैं। उस प्रकार जो होते हैं, तो सारी जो प्रक्रिया है, खेल कूद है, सांस्कृतिक हैं, बच्चों के लिए कार्यक्रम और बुजुर्ग बूढ़ों के लिए कार्यक्रम, युवाओं के कार्यक्रम, ये एक मिलन, एक कंपोजिशन जो है, ये मणिपुर की होली है, याओशंग है। मुझे लगता है कि देश भर में इस प्रकार का याओशंग या होली कहीं नहीं होती। जैसे वृंदावन में होली होती है, वो एक दिन का होती है, बरसाना में होती है, एक दिन का होती है। लेकिन यहाँ पर 5 दिन तक, जब तक छठे दिन 6th डे में अलंकार होते हैं, तब तक मणिपुर में होली होती है। तो इस जगह के बारे में थोड़ा बताइए, मणिपुर के इतिहास के लिए कितना मतलब महत्व रखता है, वो सब बताइए। ये श्री श्री गोविंद जी मंदिर है। मणिपुर का सबसे जो राजा थे, राजश्री भैगचंद्र जी, उनका
निरूपण जो भगवान श्री कृष्ण का निरूपण उन्हें नहीं हुआ था। काइना नाम की एक जगह है, वहाँ पर उनके स्वप्न में आए थे। कटहल जो थाईबोंग बोलते हैं उसके रूप में आए थे। उसके बाद उनका निरूपण होके 2-3 जगह, सबसे पहला निरूपण हुआ ये मणिपुर यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर एक लंगथबाल किला है, वहाँ पर हुआ था। उसके बाद जो आज के कंगला उसमें आए, उसके बाद ये सबसे अंतिम में इसमें आए। तो ये मणिपुर का सबसे हिंदुओं का, मणिपुरी वैष्णव समाज का सबसे महत्वपूर्ण स्थान, जैसे पंजाब में अपना सिख धर्मों के लिए स्वर्ण मंदिर है, वैसे मणिपुरी मैती समाज के लिए, मैती हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान श्री श्री गोविंद जी मंदिर। तो हाल के दिनों में मणिपुर में जिस तरह की हालात रही है, उस वजह से होली जो है मनाने में कहीं न कहीं कुछ फर्क पड़ता है, ये भी बताइए जरा। होलियों का ये सांस्कृतिक कल्चरल रूप में अभी कहा है कि खेल कूद होगा कल्चर, लेकिन जो मनोरंजन है, इंटरटेनमेंट है, ये सभी ने, क्योंकि अभी मणिपुर में लगभग 2 साल से जो दंगा फसाद हुआ, जो लोगों की डेथ हुई, उस कारण से लोग नहीं मना रहे हैं। इसलिए ये जो एक कल्चरल, एक धार्मिक रूप में मनाया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उसको स्पोर्ट्स के रूप में, खेल के रूप में जो बच्चे जो है मनाएंगे, क्योंकि 2 साल से अभी होलियां नहीं हो रही थी। इस बार मणिपुर में, जैसे मैंने कहा, बच्चों के लिए और जो सांस्कृतिक रूप में होली मनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। That was on the Holi celebration in Manipur. We'll now take a short break. Stay tuned for more updates. এইটো ভিডিঅ'তে আমি খান জানিব কেনেকা আমি খান লগা ডাইট পৰা তেল দ কমতি কৰিব। মইনা দে তেল কিনা টাইম দে কমতি আৰু কিমান তেল লাগে ইমান হি কিনিবি। ইটো পৰা আপুনি তেল খাটো মনিটৰ কৰিবলৈ পাৰিব। সবজি পাকা টাইম দে তেল দ বটল পৰা নহয় কিনা সদায় একটা চামচ পৰা নাপ কৰি কিনা ডালিবি। গাওকে বা ৰাখিব কাৰণে কিসম কিসম তেল চলাই থাকিবি। তেলকে বাৰ বাৰ গৰম নকৰিবি আৰু একবাৰ তেলকে চলাই দিছে কইলে ইটো তেল দ আৰু পকাব কাৰণে নচলাবি। বাটাৰ আৰু ঘি নিচিনা খান কমতি আৰু লাগে আমাউন হি চলাবি। ইটো ভিডিঅ'তে আপুনি খান জানিছে কেনেকা নিজৰ লগা ডাইট পৰা তেল লগা ইস্তেমাল কমতি কৰিব। আহিবি আৰু দুবাৰা জানিব আজি কি শিকিছে। মইনা দে তেল কিনা টাইম দে কমতি আৰু কিমান তেল লাগে ইমান হি কিনিবি। ইটো পৰা আপুনি তেল খাটো মনিটৰ কৰিবলৈ পাৰিব। সবজি পাকা টাইম দে তেল দ বটল পৰা নহয় কিনা সদায় একটা চামচ পৰা নাপ কৰি কিনা ডালিবি। গাওকে বাৰ ৰাখিব কাৰণে কিসম কিসম তেল চলাই থাকিবি। তেলকে বাৰ বাৰ গৰম নকৰিবি আৰু একবাৰ তেলকে চলাই দিছে কইলে ইটো তেল দ আৰু পকাব কাৰণে নচলাবি। বাটাৰ আৰু ঘি নিচিনা খানটো কমতি আৰু লাগে আমাউন হি চলাবি। Welcome back, viewers. Heading on to the next news. Indian origin astronaut Sunita Williams and Butch Wilmore are scheduled to leave the International Space Station by March 19th at the earliest. The American Space Agency said that NASA's SpaceX Crew 10 now is targeting number no earlier than 7 on March 14 as the window for launch of the Transporter 13 mission. The mission will launch 4 crew members to the International Space Station, and mission managers had earlier decided to wave off a launch attempt on Thursday due to high wind and precipitation forecasted in the flight path of Dragon. Launch teams also are working to address a hydraulic system issue with a ground support clamp arm for the Falcon 9 rocket at Launch Complex 39A at NASA's Kennedy Space Center in Florida. With a March 14 Crew 10 launch, the Crew 9 mission with NASA astronaut Nick Hague, Suni Williams and Butch Wilmore, along with Roscosmos cosmonaut Alexander
Gorbunov would depart the space station no earlier than Wednesday, March 19th, pending weather at the splashdown location off the coast to Florida. NASA astronaut Annie McLean and Nicole Ayers, JAXA astronaut Takuya Onishi and Roscosmos cosmonaut Kirill Peskov will remain in astronaut crew quarters at NASA Kennedy in Florida, and Crew 10 is the 10th crew rotation mission of SpaceX Human Space Transportation System and its 11th flight with crew aboard, including the Demo 2 test flight to the space station through NASA's Commercial Crew program. This will be the 13th flight for the first stage booster supporting this mission, which previously launched Crew 7, CRS-29, PACE, Transporter 10, Earth Gear, NROL-186 and 6 Starlink missions. Following stage separation, Falcon 9 will land on Landing Zone 4, LZ-4 at Vandenberg Space Force Base, and Transporter 13 is a dedicated small-sat rideshare mission, and there are 74 payloads on this flight. Heat wave continued to scorch Odisha as mercury soared 40 degrees Celsius at 8 places. The India Meteorological Department Bhubaneswar Director Manorama Mohanty said, in the last 24 hours, Baripata, Jharsuguda and Sambalpur and Hirakud districts have seen heat wave condition. Temperatures of more than 40 degrees Celsius are reported in Jharsuguda, Bhadrak, Sambalpur, Hirakud, Baripada, Belangir and Titlagar. She also informed that in the next 24 hours, severe heat wave conditions are likely to prevail in isolated places. Hot and humid conditions will prevail in coastal region of the state. Heat wave condition will prevail for the next 6 to 7 days across the state, according to latest update. See, Paripada, Jharsuguda, Sambalpur district, they have realized heat wave conditions. Even Hirakud also, and warm night is also realized in the district of Balangir. And 40 degrees Celsius and above are reported in the district of Jharsuguda, Bhadrak, Sambalpur, Hirakud, Baripada, Balangir, Titlagad and Baud district. And during next 5 days, there is heat wave warning is there for the districts of Odisha. So during next 24 hours, severe heat wave conditions very likely to prevail at isolated places in the district of Jharsuguda, Mayurbhanj, Sambalpur, in addition to heat wave very likely at a few places. And heat wave very likely at a few places in the district of Balashore, Bhadrak, Mayurbhanj, Angul, Dhenkanal, Balangir, Baud, Sonpur, Sambalpur, Gajpati, Sundargarh and Kalahandi district. In addition to that, warm night also very likely to prevail at isolated places in the district of Balangir, Baud, Sundargarh and Malkanagiri district. With that, hot and humid conditions also very likely to prevail in the district of Khordha, Puri, Jajpur in addition to Bhubaneswar. And on 15th of this month, severe heat wave condition, that too heat wave conditions very likely to occur at a few places, with isolated severe heat wave conditions very likely in the district of Jharsuguda, Mayurbhanj and Sambalpur. Heat wave condition very likely to prevail at a few places in the district of Keonjhar, Balangir, Baleshwar, Bhadrak, Gajpati, Sundargarh, Baud, Sonpur, Balangir, Angul, Dhenkanal and Kalahandi district. With that, warm night condition also very likely to prevail at isolated pockets in the district of Balangir, Baud, Sundargarh and Malkanagiri district. And hot and humid conditions also very likely to prevail in the district of Khordha, Jajpur, Jagatsampur, Kendrapada and Puri district in addition to Bhubaneswar. And for the day 3 on 16th also same conditions very likely to prevail over the district of Odisha. In addition to that, coastal districts of Odisha
including Cuttack, Bhubaneswar, hot and humid conditions also very likely to prevail. And on 17th also, heat wave conditions very likely to prevail at isolated pockets in the district of Bargarh, Baud, Sonpur, along with warm night conditions very likely to prevail in the district of Baud and Sonpur, and hot and humid conditions very likely to prevail over the coastal districts of Odisha. And on 18th also, heat wave conditions likely to continue to prevail in the district of Baud and Sambalpur, that too at isolated pockets. With that, hot and humid conditions very likely to prevail over the coastal districts of Odisha. Day 6, day 7 means 19th and 20th rainfall is likely. How the weather condition will be in Bhubaneswar as a heat wave advisory has been issued? So what is the message for common people? For the common people, they should try to avoid as much as possible to expose themselves over the sunlight. They should drink lot of water even if they are not thirsty, and they should wear cotton, light cotton and loose cotton clothes. Then they should eat like all these drinks like lassi and nimbu pani and that turani, we call this as rice water, and other drinks also. Continuously they have to keep their body hydrated, and they should not go out for a long time. They should not work, heavy work should not be done during the peak hour like 12 to 3 o'clock, and heavy work also should not be done by the people. And the elderly people and comorbid people, they should take precaution during this heat condition. There was on a heat wave which will continue till March 18th. Heading on to the next news, where rescue operations are underway in Nagarkurnool on Friday for 7 workers still trapped inside the SLBC tunnel of the Srisailam left bank canal since February 22. On Tuesday, robotic teams entered the Srisailam left bank canal SLBC tunnel for search and rescue operations for the trapped workers. 110 rescue personnel along with UNVI robo experts entered the tunnel to carry out the operation. Rescue teams have removed the body of 1 worker from inside the tunnel on March 10th. Following the incident, Telangana CM Revnath Reddy announced an ex gratia of ₹25 lakhs for the kin of the deceased. On February 22, a 3-meter section of roof of an under-construction stretch of the SLBC tunnel collapsed at the 14-kilometer mark near Domalapenta in the Nagarkurnool district in Telangana. The collapse occurred just 4 days after construction work had resumed following a lengthy hiatus. While some workers managed to escape, 8 got trapped. Those are all the updates for now. Stay tuned for more and keep watching Hornbilltv. Because sometimes news is more than mere information. And we all need a little more clarity on the details about live people and events that truly matter. For individuals that demand reliable news. From reliable news organizations and credible and award-winning journalists. And how we look at the world. This is exactly the reason why we strive to serve you and the society. Because proper news can not only inform our lives but also change the way we look at it. We pursue events that are not only important to you but also useful for a life's perspective. And that's the primary reason Hornbilltv is here to fill that space. We are Hornbilltv.